तो मियोसिस 1 जो है, दिस इज द डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। ठीक है, it is completed, meiosis 1 is completed in following stages, means prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1 and interkinesis. Now prophase 1 is the longest phase of the division phase of meiosis. And this prophase 1, ये जो prophase 1 है, it is completed in different parts, different phases, different stages, known as leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and dikinesis. ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्यूटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस. These are the different stages through which a cell has to pass during prophase 1. अब देखो लेप्टोटीन में क्या होता है. लेप्टोटीन is the first stage of prophase 1, in which condensation of chromosomes take place. क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू हो गया. ठीक है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है. Centrosomes, in the case of animal cells, starts to move towards opposite poles. Let मान लो कि एक एनिमल सेल है. This is an animal cell, and there is a nucleus. Nucleus will have nucleolus and chromosomes and chromosomes. Now, during leptotin, as I have told you, क्या होता है? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू होता है. क्रोमोसोम क्लियर दिखाई तो देगा, बट लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक. क्रोमेटिड्स दिखाई नहीं देगा आपको. क्रोमोसोम जो है, इस क्रोमोसोम में आपको पता है 2 डीएनए है, तो आपको क्रोमेटिड्स दिखाई नहीं देगा. बिकॉज इंटरफेज में आपने क्या देखा? दे आर क्रोमेटिन फाइबर्स. So there is condensation of chromatin fibers to form the chromosomes, means visible forms. But both the DNA, both the chromatids are not distinct. Long thread-like structure is seen, which represents the chromosomes. एक तो कंडेंसेशन समझ के क्रोमोसोम्स का होना है, लेकिन क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स आपको डिस्टिंक्ट नजर नहीं आएंगे. सेंट्रियोल्स जो है, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं. ठीक है, आपको पता है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है.
सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन होता है ड्यूरिंग एस फेज। तो इसका मतलब एक सेल में दो सेंट्रोजोम हैं और हर एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म द एस्ट्रल रेज। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाता है? एस्ट्रल रेज बनाता है। एज वी हैव स्टडीड इन द केस ऑफ माइक्रोसिस आल्सो। सो two centrosomes with astral rays means esters, ये जो दो एस्टर हैं they are trying to move away from each other। लेफ्ट टू ठीक समझ में आ गया? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन टेक्स प्लेस। दूसरा क्या हुआ? सेंट्रोजोम्स tend to move away from each other। Initiation of the disappearance of the different structures started. However, the initiation is not so clear, but it will tends to proceed further। क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में फैला हुआ है। वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम जो है वह एक दूसरे से दूर है, बट अदर एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स आर नियर बाय ईच अदर। इट मींस पोलराइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन द केस ऑफ लेफ्ट टू टी। नाउ the cell will enter into the zygotine stage, and this is very crucial stage। zygote stage में क्या होता है? देखिए, the important phenomenon that is pairing of homologous chromosomes, pairing of homologous chromosomes। अभी मैंने आपको homologous chromosome बताया था कि जिसके स्ट्रक्चर सेम होंगे, जिसमें पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम होगा, जिस पर सेम जीन्स होंगे, उसके लोकाई सेम होंगे, ऐसे क्रोमोसोम्स के पेयर को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है ना? तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। अभी तो कौन क्रोमोसोम कहां पर है ये पता नहीं, but whenever there will be pairing, it means that indicates the initiation of zygotine stage। कहने का मतलब जाइगोटीन में जब सेल जाएगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम से एक दूसरे के पास आ जाएगी। कहीं भी रहेगा न्यूक्लियस में, वह दोनों एक दूसरे के पास आ जाएगा। सो होमोलोगस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम विल स्टार्ट इन द केस ऑफ जाइगोट। जाइगोट में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। लेट अस फॉर कन्वीनियंस हम मान लो कि दो पेयर क्रोमोसोम ले रहे हैं। देयर आर 4 क्रोमोसोम्स हियर। अभी मैंने आपको कहा था क्रोमोसोम्स तो दिखाई देंगे लेकिन क्रोमैटिड्स अलग दिखाई नहीं देगा। एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच पेयरिंग होगी। दिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, this assemblance of chromosomes, this assembly of chromosomes of the same type leads to formation of bivalent। तो जाइगोटीन में क्या स्टेज आ गया? बाइवैलेंट स्टेज क्रोमोसोम का बन गया, मतलब क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई। पेयरिंग मींस होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आ गए। एंड these two chromosomes, इस पेयर में जो टू क्रोमोसोम्स है वह एक पास हैं, एक दूसरे के आसपास हैं। And there is a structure, there is a component that keeps these two homologous chromosomes together
known as synaptonemal complex. ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को एक साथ रखने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं synaptonemal complex, and that structure is mainly composed of RNA and protein. ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, एक synaptonemal complex है जो होमोलॉगस पेयर्स को एक साथ रखता है, and this assembly of homologous chromosome together is known as homologous pairing, synapsis or synthesis. Right? homologous pairing हो गई, there are 4 chromosomes यहाँ पर हम देख रहे हैं, 2 pairs बन गए, ये means centrosomes will further go apart, ये centrosomes भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, and other structures also tends to be disorganized gradually. further progress होगा disorganization की, ठीक है। डिसऑर्गेनाइजेशन में आपको मैं बताया था कि डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसोल्यूशन, डिसअपियरेंस किसकी होती है, तो न्यूक्लियस डिसऑर्गेनाइज हो जाता है फाइनली, ठीक है। अप टू दिस स्टेज जो ही प्रोफेज 1 लास्ट करेगा, मींस at the junction of metaphase and prophase there will be disorganization of nucleolus, nuclear membrane, endoplasmic reticulum, Golgi complex, ठीक है। तो these structures will disappear, तो disappearance जो है, disorganization of the different components are in progress, but the main event that occurred during zygote is pairing of homologous chromosome, means synapsis, and separation of centrosomes, and estrogase means esters one from other, means there is a pair of centrosomes, each centrosome move away from each other. Clear? Now comes to the packaging. Further condensation. Condensation is going on, but till zygote there is no clear vision of chromatids. As soon as the cell enter into the packaging stage, chromatids will be visible. Further condensation leads to the formation of chromatids. तो क्या हो जाएगा, यहाँ chromatids बन जाएंगे। अब हर एक क्रोमोसोम में आपको 2 chromatids नजर आएंगे। Each chromosome will now have 2 chromatids. ये आपको पता है कि हर एक क्रोमोसोम में 2 chromatids बनेगा, क्योंकि 2 DNA होता है। तो ये जो homologous chromosome है, इसमें क्या होगा, 2 chromatids बनेंगे। तो हमने 2 पेयर क्रोमोसोम का लिया था, so this is another pair, let us, तो इसमें भी 2 chromatids हैं, and these are the 2 pairs of homologous chromosomes. So during packaging, what we see, chromatids are visible, means tetrad stage is seen. There is bivalent, means 2 chromosomes are assembled together by means of the synaptonemal complex, and there is now formation of tetrad, means 4 chromatids are visible now in each pair during packaging stage. And an important event that I have already told you
there will be crossing over. There will be crossing over. क्रॉसिंग ओवर होगा. अब देखो these two chromatids of same chromosome are known as sister chromatids, and two chromatids of different chromosomes are known as non-sister chromatids. So there will be exchange of some genes. There will be exchange of some part of chromosomes. There will be exchange of some part of chromatids between non-sister chromatids of homologous chromosomes. यानी ये homologous chromosomes है, हर एक क्रोमोसोम में दो chromatids हैं, sister chromatids. एक क्रोमोसोम का ये sister chromatid और दूसरे का ये chromatid. डिफरेंट क्रोमोसोम्स का, होमोलोगस क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड्स होता है उसको हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. सो ये है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है उसमें आपस में जीन्स एक्सचेंज होंगे. जीन्स क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे. This process of exchanging of genes between non-sister chromatids of homologous chromosome is called crossing over. ठीक है ना? एक का जीन दूसरे पर आ गया means there will be variation. There will be variation, right? Due to this exchange of some parts, the process of initiation of exchanging the gene leads to formation of a specific structure known as recombination nodules. तो यहाँ पर क्या होगा? इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, जीन्स का एक्सचेंज हो रहा है. तो इसके बीच में क्या होगा? रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे. रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे. इस एक्सचेंज में हो गए हैं क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन नोड्यूल. यह दिखाता है कि कितने जगह पर एक्सचेंज हो रहा है. मींस these nodules may be one or more depending upon the site of exchange. समझे ना? साइट ऑफ एक्सचेंज पर डिपेंड करेगा. तो what happened during Prophase is clear. Further movement of centrosomes will take place. Centrosomes का क्या होगा? Further movement होगा towards the opposite poles. So important phenomena that occurred during packaging, that is the formation of recombination nodule. That is the exchange of genes between non-sister chromatids of homologous chromosomes, and other event, that is further movement of centrosomes, and other events, that is further dissolution of different structures. Right? Now the cell will enter into the diploid stage. डिप्लोइड स्टेज में जाएगा से, तब क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, एक्सचेंज तो हो चुका है, एक्सचेंज का इनिशिएशन हो गया, रिकम्बिनेशन नोड्यूल बन गया. अब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर रहना चाहिए ना. द पर्पस ऑफ सिनेप्सिस was crossing over to exchange the genes, and genes have been exchanged during packaging. Now these chromosomes of the pair have to be separated. इस क्रोमोसोम में एक दूसरे से अलग होना है. What will happen for that? उसके लिए क्या होगा? तो जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है उसका डिसोल्यूशन शुरू हो जाएगा.
अभी आपने देखा था सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बीच में था, दोनों को पकड़ के रखा था एक जगह होमोलोगस क्रोमोसोम्स को। नाउ उसका डिसोल्यूशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी रखेंगे। दे विल ट्राई टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बट एट पॉइंट जहां पर रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल बना है वहां पर भी एक दूसरे से अटैच है ना। ओके, सो एक्स लाइक स्ट्रक्चर इज विजिबल। दैट एक्स लाइक स्ट्रक्चर represents the exchanging part of the chromosomes between the non-sister chromatids is known as chiasma. Is known as chiasma. So chiasma formation is an important event of diplotin stage. Terminalization of chiasma takes place. chiasma जो है वह टर्मिनल पार्ट की तरफ शिफ्ट होगा। बिकॉज क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वह डिसॉल्व हो रहा है, क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सो द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ जीन्स मीन्स पॉइंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल will shift towards the terminal part. तो एक्स लाइक स्ट्रक्चर वो बना था जिसको हमने chiasma कहा था, उसका शिफ्टिंग होगा टर्मिनल पार्ट की तरफ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्टेज, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasma, chiasma का अपलोड हो जाएगा, एंड further shifting of centrosomes towards the poles, ठीक है, towards the poles, and further dissolution of nucleolus, nuclear membrane, endoplasmic reticulum, Golgi complex, etc. ठीक है। Now the cell will enter into diakinesis, means terminalization of chiasma will be completed, means synaptonimal complex completely disappears. Chromosomes of a pair जो synapsis हुआ था, they will now be free from each other. They will now be free from each other, but they will not go away from each other. They are not free from each other, but they are at the same place. ठीक है? They are at the same place. chiasma का खत्म, दोनों क्रोमोसोम अलग हो गए डायकाइनेसिस में। टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasma started in diplotin, completed in diakinesis. Centrosomes with ester rings means esters reach the poles, opposite poles. Nuclear membrane disappears, nucleolus disappears, and there is now no distinction between cytoplasm and nucleoplasm. It means the second stage, that is metaphase I, has initiated. Metaphase I has initiated. ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा इसमें? फाइनली डायकाइनेसिस में क्या हुआ? डायकाइनेसिस में क्या हुआ? टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो गया, क्रोमोसोम्स ऑफ a pair gets completely separated. They are together but not far from each other. Nuclear membrane dissolution completed. Centrosomes
disappeared. So what happened now? Finally, cell enters into metaphase 1. क्या हो गया बेटा? देख लिया आप, सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल पर पहुंच गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गया, ठीक है। और क्या हुआ? ये दोनों क्रोमोसोम जो एक पेयर के थे, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो गए? हर एक पेयर का अलग हो गए, न्यूक्लियस गायब हो गया, अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स डिसऑर्गेनाइज हो गया। Means there is no distinction now between cytoplasm and nucleoplasm. Hence the cell enters into metaphase 1. ठीक है?